Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to our podcast series, Let's Talk. Today, we are here with another episode of Religious OCD. I am Ramisha Aswar, and I am doing my BS Biomedical Engineering from RIPA International University. And I have currently joined Roohaniyat Foundation as a volunteer, and I'm working for a campaign, Mental Health Awareness. आज की हमारी मेहमान है निम्रा मुश्ताक. We are so glad to have her with us. We are honored to have her back with us. Her previous discussion has been so helpful to all of us to understand the complexities of mental health awareness. Assalamu alaikum, Nimra. वालेकुम अस्सलाम. Okay, Nimra. आज का हमारा topic है religious OCD. Let's decode the name. What is religious OCD? Okay, first of all, thank you so much for having me back and talking on such a sensitive yet very important topic, जिसके बारे में awareness देना is a very big important thing right now. Basically, if we talk about religious OCD, then it is a type of OCD. और अगर हम ये बताएं लेमैनली मैं इसको डिफाइन करूं तो OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसमें हमारे पास दो डोमेन्स हैं जिसमें ऑब्सेशंस होती हैं और कंपल्शंस भी होती हैं. ठीक है. सो ऑब्सेशंस बेसिकली थॉट्स हैं जो एक इंसान को बार बार आ रहे हैं और कंपल्शंस एक रिपीटेटिव बिहेवियर है उन थॉट्स के ऊपर जो उसको आ रही हैं और वो काम कर रहा है. सो बेसिकली रिलीजियस OCD इज वन ऑफ अ टाइप फर्दर इन OCD. Exactly. Okay, so Nimra, how is religious OCD different from other OCDs? And how does it differ from other religious beliefs and practices? Well, रिलीजियस OCD के बारे में अगर बात की जाए, जिस तरह के आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज अ डिसऑर्डर, तो दिस इज समथिंग which is not in the hand of the person who is having this thing. And of course it is common in those people. If I talk about the triggers, ये cause क्या करता है या why this term has introduced, like there is something like religious OCD, that is that sometimes if you are brought up और आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस थोड़ी स्ट्रिक्टली की जाए या स्ट्रिक्टली के अलावा ज्यादा उन पे फोकस किया जाए, तो समटाइम्स इफ यू ऑलरेडी हैव OCD यू कैन डेवलप दिस पर्टिकुलर टाइप विच इज रिलीजियस OCD, जो कि बेसिकली आपको रिलीजियस से रिलेटेड होगी. एंड बेसिकली इट्स अ साइकिल. अगर हम इसमें जाए, इट्स अ विशियस साइकिल जिसमें एक इंसान स्टक रहता है. फर्स्ट यू हैव ऑब्सेशंस, आपको ऑब्सेशंस आ रही हैं, देन उसकी वजह से एंजाइटी कॉज हो रही है. जब वो एंजाइटी कॉज होती है तो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक्ट करूं और फिर एक रिलीफ मिलती है. देन द साइकिल गोज ऑन अगेन, विशियस साइकिल है ये. तो रिलीजियस OCD में ऐसे है कि जो जिस बंदे को ये है ना, उसमें ये जो पर्टिकुलर ऑब्सेशंस के बाद गिल्ट आ जाता है ना, एक शेम और गिल्ट, जिसकी वजह से वो ये फिर काम करता है पर्टिकुलर जो भी उसका थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली. वो पर्टिकुलरली गिल्ट और शेम के थ्रू होता है बिकॉज रिलीजियसली उनको लगता है कि why we are having these kind of thoughts, or they are like sometimes like they feel like they are blasphemous thought or something like that कि क्यों ऐसा क्यों है, नॉर्मल लोगों से हट के थोड़ा हमें क्यों इस तरह के ख्यालात आ रही हैं. सो बेसिकली दिस इज हाउ वी It विल triggers them प्रोसीड. again and they go through the whole cycle again. एग्जैक्टली, So, what are the बिल्कुल. common triggers, or what does the individual who is going through it, उसके ऊपर क्या impact डालता है इन सब चीजों का? ट्रिगर्स तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली काफी सारे हो सकते हैं. ये भी हो सकता है मोस्ट कॉमनली कि आपको ऑलरेडी OCD हो, ठीक है, और उसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर टाइप डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट योर होम और एनी इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं और समथिंग. तो उसके अलावा ट्रिगर्स और ये भी हो सकते हैं कि जिस तरह की मैंने पहले भी बात की, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है और उसके अलावा खुद आपके जो है ना
आपके थॉट्स इस तरह डेवलप हो चुके हैं वो काम कर करके कि नहीं दिस इज रॉन्ग, देयर सम प्रैक्टिसेस, देयर सम रिचुअल्स जो लोग अपने आप से करते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई और गेट अ रिलीफ, और वो यही चीजें होती हैं. तो दिस इज ऑफ कोर्स वेरी पर्सन टू पर्सन. We cannot talk about someone's belief system or something, that is their personal thing. But sometimes to help these kind of people, because of course this is a problem, because it's causing distress in their Yeah. life, so you have to address these kind of things then. And also you have mentioned कि उनके लिए चीजें काफी sensitive होती हैं. So what how can we ensure that कि हम उनके साथ ये respectful manner में उनके साथ हम इस चीज की discussion कर सकें, because again any mental health issue is very sensitive to that person, और उसको to bring it on table is very hard. तो हम उसको That's true. respectfully कर सकते हैं उसके साथ discuss. um Basically अगर हमने बात करनी है ऑफ कोर्स किसी से, एंड इफ यू वांट टू कन्फ्रंट समवन और टेल और वांट टू हेल्प देम, तो उसका यही तरीका है कि थोड़ी सी इन सेंस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन पर्टिकुलर सिचुएशन हम जो है पर्सन को दे सकते हैं, लाइक पोलाइटली एंड हम्बली, वाइल नॉट disrespecting their Hmm. beliefs and their practices, of course. तो we can talk about it, we can talk like have a conversation like this कि हम थोड़ा religious perspective से देखें. Sometimes of course we need to tell these people that of course we know that how you feel. सबसे पहली बात ये कि understanding them Yeah. and listening to them. Active listening is very important कि आपको भी Yeah. समझ आए, अगले को पता चले. वो अगर नॉर्मल पर्सन, ऑफ कोर्स हर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो Hmm. उनको पता चले कि यार how the other person is feeling, because we have to do the empathetic listening towards them, that if we are in their shoes, how we will feel about it. तो of course religious education और थोड़ी सी psycho education about it, and of course they also know majority of the people have insight. बट ऑफ कोर्स अगर हम ओसीडी की बात करें तो ट्रीटमेंट सीकिंग ओसीडी वाले लोगों में बहुत कम होता है, और कई मानने को तैयार भी नहीं होते, और पर्टिकुलरली Yeah. दिस इन दिस टाइप ऑफ ओसीडी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू समथिंग वेरी very sensitive a part of the life, and it is related to their belief system and Yeah, exactly. religion. So yeah. So, how does it affect their personal life, their relationships, their academic performances, their daily life? I definitely do affect, just like of course praying 5 times जब नमाज पढ़ने के लिए इस तरह के लोग जाते हैं, तो sometimes it is very difficult for them to even get up from the mat, and they sometimes think कि ओ शायद मैंने सही नहीं पढ़ी नमाज, या मुझे लगता है आई एम नॉट प्योर इनफ. ठीक है, दे डू वुजू बार बार करना, they do this and they repeat dua, like अगर तस्बीह पढ़े दुआ पढ़े वो बार बार पढ़े बार बार, and that doesn't stop there, because they are not satisfied, and they think that खुदा न खास्ता we will be punished for these kind of things, if we are not doing it right, because but of course again we need to tell the people that religion and especially Islam is not that difficult, that Yeah. हम उसको जितना बना देते हैं अपनी डेली लाइफ में, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अगर हम समझें तो बहुत ज्यादा इस्लाम ने हमें आसानियां दी हैं और Okay. इस तरह की चीजें दी हैं. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड कल्चरली एंड अडॉप्टेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. Yeah. As you have mentioned culture, तो इससे मेरे सर में एक सवाल आया है कि कौन से मिसकंसेप्शन है ओसीडी को लेके हमारे मुआशरे में, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि इस टर्म से भी वाकिफ नहीं है, रिलीजियस ओसीडी से, एंड डील करना ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ तो बिल्कुल भी हमारे मुआशरे में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है. तो क्या मिसकंसेप्शन है इस हवाले से?
दैट्स राइट, बिल्कुल मिसकंसेप्शंस तो है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम नॉर्मली नहीं सुनते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता, बिकॉज अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और इट इज समथिंग दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एंड गिवन अवेयरनेस अबाउट। बट ये वो वाली बात है कि आजकल वैसे इस तरह की चीज़ों को लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जो मैंने आजकल की स्पेशली जेन जी में या आजकल की जनरेशन में हाँ, देखा, दैट दे label people like, oh, why are you being so OCD and stuff like that. Halaki, yes, we this is just a very casually say broad that. term. Mhm. Yeah, they casually say that, or they say like, other things too, कि मुझे तो insomnia हो रहा है, or I am like having depression, and Anxiety, casually, casually. usually. So पहली बात है, misconception myths बहुत ज्यादा है, डिसऑर्डर इस तरह तो डायग्नोज होता नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे मैंने मेजोरिटी ऑफ द लोगों को देखा, एंड यू हैव ऑल्सो सीन दैट इन आवर सोसाइटी, हमारे कल्चर में, सोसाइटी में ये चीज कॉमन है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको रिलीजियस ओसीडी है। वो इस चीज से डील कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं इट्स प्रिटी नॉर्मल। ओके, दिस हाँ, इज नॉर्मल, दैट आई एम क्लीनिंग माई सेल्फ बार बार, आई एम प्योर, मैं बार बार वुजू कर रहा हूँ, आई एम प्योर। ऑफ कोर्स doing this makes you pure and all, but repetitively doing it, and you know you एक बहुत गहरा अमाउंट ऑफ टाइम उस पे लग रहा है ना, यू आर डूइंग दिस, एंड yes. उसके दौरान कुछ चीजें और भी हो सकती हैं, लाइक दीज आर जस्ट योर थॉट्स, यू आर सेटिस्फाइंग योर थॉट्स। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों को डेफिनेटली, और ये टर्म एक ऐसी टर्म है जो कैजुअली इस तरह तो यूज हो रही है, लेकिन हमारे और लोगों को नहीं पता। जिस तरह हम बात करें अडल्ट्स की, या हमारे बड़े बूढ़ों की बात करें, तो Exactly. दे आर सफरिंग बट दे डोंट नो। Yes, exactly. That is one of the thing. So, एक इंसान जो कि इस suffering से गुजर रहा है और उसके लिए what advice do you have for an individual who is having this religious OCD? First of all, of course, seeking professionals' help for this, talking to your family about this particular thing. That because of course OCD एक ऐसी चीज है, it comes under anxiety, because इस particular duration में, situation में आपको anxiety बहुत ज्यादा होती है, so of course you need someone to listen to you. You should seek professional help ताकि आप psychotherapy जो है opt कर सकें, और उसमें भी एक बहुत ही जो बहुत ज्यादा सूटेबल साइकोथेरेपी है, फॉर टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट फर्दर, तो उसमें ईआरपी इज द बेस्ट वन, विच इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी फॉर द people who are having OCD. So it helps a lot. And what does family play role over here? एक ऐसे इंडिविजुअल जिसको OCD है उसकी फैमिली को किस तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए? Because again, it's a very sensitive topic, and I guess sometimes people don't really understand that it is not in individual's hand to control it. So family को Yeah, किस तरीके से definitely. सपोर्ट करना चाहिए? फैमिली तो देखिए हर उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक इन एनी सिचुएशन, क्योंकि जब तक आपकी सराउंडिंग, आपकी इन्वायरमेंट उस तरह की नहीं होगी जिसमें आप बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स फर्स्ट द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ काउंट्स फॉर दिस थिंग, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन हेल्थ, बट देन कम्स द फैमिली, द बेसिक Hmm. सपोर्ट। तो फैमिली को समझना, सुनना और साइको एजुकेशन बहुत जरूरी है। मतलब उनको भी नहीं पता, ऑफ कोर्स जब एक बंदे को पता ही नहीं है, लाइक अब वो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, अ पर्सन इज डायग्नोज, देन दे गेट टू नो, देन वो साइकोलॉजिस्ट ही फैमिली काउंसिल करता है या साइको एजुकेट करता है। तो ऑफ कोर्स साइको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन व्हेन द फैमिली विल नो, they will also know how to treat that particular person at home, and whether if they're having thoughts, then why are they having these thoughts, because they should understand then at that point, acha, this is something which is not in that person's control. Exactly. And another question I have is that how can we reduce the stigma? How can we promote the awareness of religious OCD? स्टिग्मा रिमूव करना तो ऐसे ही है, जिस तरह अभी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है अबाउट मेंटल हेल्थ के, वो भी Yes. इम्पोर्टेंट है एज वेल।
एज द फिजिकल हेल्थ। और ज्यादा कॉमन जो चीजें सुनने को मिलती हैं लोगों को जिनके बारे में अभी तक अवेयरनेस हुई है, वो कुछ सादा से ही डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो आई गेस इट विल टेक सम टाइम, बट जैसे जैसे वी आर गिविंग द अवेयरनेस एंड इसके बारे में काफी बात हो रही है, वर्कशॉप्स चल रही हैं, कैंपेन्स हो रही हैं, और कुछ इस तरह की वेबसाइट्स और सब कुछ भी है जो कहता है कि वी आर हियर टू हेल्प यू। दो इट इज लेस इन पाकिस्तान, अगर आप देखें तो इट इज मोर इन वेस्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि उधर वहां पे तो बहुत ज्यादा वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड अवेयरनेस के लिहाज से भी हम पीछे हैं। लेकिन अवेयरनेस इसके ऊपर इसी तरह है कि इसके बारे में बात की जाए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेयरनेस दी जाए थ्रू डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स हु डजंट यूज टेक्नोलॉजी, Yes, या कौन technology, आजकल के yes. दौर में मोबाइल नहीं यूज कर रहा। तो ऑफ कोर्स थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि हैं मेंटल हेल्थ के, या इन चीजों पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक टुडे वी आर टॉकिंग एंड ट्राइंग टू गिव Yes. अवेयरनेस इन दिस होप कि ऑफ कोर्स ये कुछ लोगों तक तो पहुंचेगा। तो डेफिनेटली आई गेस आज कल के दौर में ये चीज जारी है, और इन द अपकमिंग एरा इट विल बी नोन, एंड लोगों को पता होगा कि दिस इज समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड इट इज नॉट लाइक द पर्सन इज एक्टिंग अप, और जो भी स्टिग्मास हैं इसके रिलेटेड, दे आर लाइक जो भी इनको लेबल किया जाता है वो खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। Yes, you have mentioned a very great thing that media is a great weapon for all of us. इसकी कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को इससे आगाह कर सकते हैं कि there is one thing and you should be careful while talking with people, क्योंकि लोग आजकल बड़ा insensitive होके इन topics के ऊपर बात कर रहे होते हैं. So, what are the resources available? Again, in Pakistan, they are very less. But what are the resources that are available for individuals who are going through religious OCD? For religious OCD, the resource which I can think of right now is definitely, consulting a psychologist, go to a professional to seek help, of course, but this is not something कि हम इसको ऐसे कहें कि जिस तरह कोई सिचुएशन है लाइफ थ्रेटनिंग एट दैट पॉइंट, बट ऑफ कोर्स इसके ऊपर काम करने के लिए देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट सिंपली। एंड ये ऐसी भी एक चीज नहीं है कि जो हम कहें कि सिर्फ आपको लोगों से शेयर करने में, घर वालों से बात करने में, या फ्रेंड्स से एडवाइस लेने में ठीक हो जाएगी। नो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ थिंग which exists, and it is a whole disorder, and of course इसकी level of severity भी different है person to person. So even if the level of severity is high, then you are given medications too for that, to manage your daily life routine with that. Exactly. Timur, I wanted to ask one more thing that there are like some issues जो कि treatable होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम reduce कर सकते हैं. So like religious OCD is something that a person can practice और उसको थोड़ा सा control कर सकता है. Definitely, it is manageable. I would say that it is manageable along with the psychotherapy, your family support, peer support, and of course, if you are, prescribed medication and all that, and also, you just work on your lifestyle, and on your this particular thoughts, because of course, इसमें थोड़ा आपको खुद को भी insight आपको खुद को भी इंसाइट देनी पड़ती है, खुद को भी साइको एजुकेट करना पड़ता है दैट व्हाट आई शुड डू व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दिस पीरियड ऑफ टाइम। Exactly. Thank you so much, Nimra, for giving us another insight on another complex topic. I hope कि ये चीज जा सके उन लोगों तक जिन लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और थोड़ी बहुत इस मुआशरे में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए. We are so glad to have you. We will see you in another session, inshallah ta'ala. Thank you so much for इंशाल्लाह। giving us your time. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।